मोहलत दी जाती तो मैं सारी उम्मत को बख्शा देता। आज हम औलिया की बारगाह पे आए हैं, यहाँ से दुआ करते हैं कि सारे आलम में मुसलमानों का बोल बाला कर दे, हिफ्ज़ व आमान में रख दे, कौमी एकजहती और ख़ुद बिलखुसूस तबके मशाइखीन में, आल रसूल में, औलाद अली में इत्तिहाद अता फरमा। सैयद अबुल फतह बंदगी बादशाह खान जी साहब का कौन सा नको कहीं बोल सरपंच आप कल जो है पूरा ठहर के मैंने बहुत बड़ा काम करे रोड का। 1 घंटा ठहर के काम हमारे धूप पे सरपंच साहब बालकुंडा ग्रामम और आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ఈ సర్పంచ్ బాల్కొండలో ఒక పేరు వచ్చింది. ఏమి వచ్చింది అంటే సర్పంచ్ మానవ సేవ సర్పంచ్ బాల్కొండ గ్రామం అని వచ్చింది. కొద్దిగా రకరకాల ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆడు కూడా ఇది గ్రామం అంటే వెల్ఫేర్ వర్క్, కొద్దిగా సర్పంచ్ ఎందుకు ఉంటుంది అది ఆలోచించి మంచిగా సర్వీస్ ఇవ్వాలి, గ్రామంకి డెవలప్మెంట్ చేయాలి. సర్వీస్ గ్రామం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సివిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉంటుంది, దానికి మంచిగా సర్వీస్ ఇవ్వాలి. మరి మళ్ళీ ఇది గార్బేజ్ లిఫ్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, దానికి దీనికి గ్రామం మంచిగా చూసుకోవాలి. వీ నీడ్ ఏ persistence and continuous posting of executive officer gram panchayat that will definitely have a good delivery system. If you government, if the district panchayat officer, we request district panchayat officer to please keep a good regular executive officer at Balkonda mandal. It's a big mandal consisting of dargahs, mandir, masjid, church, everything is there. చెప్పండి. And also big GP in the district. డిస్ట్రిక్ట్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో మేజర్ గ్రామం ఉంది. గ్రామ పంచాయత్ బాల్కొండ ఇస్ ద మేజర్ గ్రామం ఇన్ ద నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. వీ రిక్వెస్ట్ శ్రీ కేటీ రామారావు గారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ, టు ప్లీజ్ పే సమ్ స్పెషల్ అటెన్షన్ టు బాలకొండ గ్రామం. బాల్కొండ గ్రామం ఇస్ మన సురేష్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే చేసిన, వాళ్ళు అసెంబ్లీలో కూడా నంబర్ 1 స్పీకర్ లాగా చేసిన, ఇప్పుడు రాజ్యసభ మెంబరు. వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ బాల్కొండ మండల్, బాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీ. Now Prashant Reddy garu is doing. He is also minister. Earlier he handled the Kakatiya and Bhagiratha mission Bhagiratha vice chairman. Now he is minister. I know that he is a minister for irrigation. IMC R&B है ना, R&B के मिनिस्टर हैं और असेंबली अफेयर्स देखते हैं. और वो सबसे पहले तो भगीरथा मिशन जो गवर्नमेंट को का बैकबोन है, इट्स ए फ्लैगशिप प्रोग्राम. काकतिया हो, भगीरथा हो, कैलेश्वरम हो, हरिताहरम हो और रेजिडेंशियल स्कूल हो गवर्नमेंट, these all are CM flagship programs for which the people are enjoying the fruit of having a TRS government. Now the government has coming up from the teething stage, so there will be a good deliverance. If you have again same government, the delivery system will improve. But at this point we need a clear manifesto that should be, whatever promise in the manifesto, that should be implemented. Apart from reservation of minorities, apart from the welfare work, and moreover the important thing is I appreciate the Dharni portal first of all, because there was a lot of ambiguity in the revenue records. That ambiguity has fulfilled now, because when you clear the ambiguity, when you have a transparent record, the foreign investor, corporate companies will come. Always there is a problem in revenue record. 70% of the revenue records need to be reconciled as per the Waqf record, because there is a lot of Waqf properties has wrongly entered into the revenue records, which needs to be correct. That is the way we can say not only save the properties of endowment and Waqf, but there will be a clear, transparent record will there. The investor will not have fear to invest. After doing a project on when they reach to a level of acme, at that point the people do and hue and cry this endowment and Waqf land. So that will really disappoint the corporate investors and the corporate sector.
So the Dharni portal is a very excellent idea of KCR Garu. That has to be implemented properly, and now whatever hurdles is coming in sub-registrar office for registration, that needs to be flexible, because people invest on basing on the Gram Panchayat approval. That time Gram Panchayat approval was enforced. Now it comes under municipality. Municipality have a different procedure. So the people should not be suffer for layout regularization, unnecessary penalties, because whatever the rules was enforced, they paid and they enjoyed. After that, you have a provision of municipality, urban, metro, and all those things comes. So when your GHMC limit is expand in the city area, it goes to Hamda, and in the district level, Gramam to it enhance to the municipal limit. So the procedure of having the widening of road, that all differs. But whatever enforced in erstwhile, that was approved by some authority. If the buyers has suffering now to pay the penalty, then who is responsible? There should be a corresponding responsibility to the officer concerned who has approved the plan or whatever the layout approved. So we can't do any there is no corresponding responsibility are taken care by the government. So at this point, the government should be flexible to the citizens who have already purchased the properties in good faith. So there should no penalties for layout regularization. It should be flexible, and we should have the welfare projects in the not in plan budget. It should be in non-plan regular budget. If you have non-plan budget, then it will be a regular budget. Shadi Mubarak Kalyana Mandalam ఇప్పుడు పెళ్లి అయిన తర్వాత ఇప్పుడు బిడ్డ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఏమో చెప్తారు झूले का आपका क्या बोलते हैं उसको కేసీఆర్ కిట్ కాదు, మళ్ళీ ఇది షాదీ ముబారక్, ఇది మన ఏముంటుంది కళ్యాణ మండలం దొరుకుతుంది ఎప్పుడు సంవత్సరాల తర్వాత కదా. దట్ హ్యాస్ టు బి ద డెలివరీ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి మేక్ వెరీ ఫాస్ట్ from the respective authority. We need cooperation of the mandal officers who issued the income certificates and all that, and verification the procedure should be simplified. आप जरा हमारा जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से, बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना। है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में। फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली
खस्ता हाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो 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 जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी माँ की मदनी युल्ला नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा 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 नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वादी कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वादी कुल है। उन पर ही नजर, उन पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी 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 है। वो मेरा नबी है, मेरा नबी है। वह शम्स दुहा चेहराए अनवर की झलक है। वल्लैल सजा गैसुए हजरत की लचक है। वह शम्स दुहा चेहराए अनवर की झलक है। वल्लैल सजा गैसुए हजरत की लचक है। आलम को जिया, आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी 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 है। वो प्यारा नबी है, प्यारा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरआन में भी जिक्र जली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी 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 है। वो सोना नबी है, सोना
से मौला ने पुकारा, क्या शान है, क्या शान है उसकी जो उम्मी लकबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है, मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिबे रफ़ रफ़ शबे महराज हुआ है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिबे रफ़ रफ़ शबे महराज हुआ है। असरा में इमामत, असरा में इमामत जिस नबियों की मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो सोना नबी है।